So just see here, there are different types of objects. When they are placed in front of concave mirror, how what type of image is formed? So see here, this is a concave mirror. The object is placed at infinity. Infinity मतलब क्या? बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, जो हमें दिखाई नहीं देता है. वो ऑब्जेक्ट से कुछ इंसिडेंट रेज आ रहे हैं. This incident rays, when they fall on the mirror, they pass through a reflection. So when object is placed at infinity, that time you can see when the ray passes through pole, it passes with the on the other side making the same angle, and here is the image obtained. तो यहाँ पे आपको image actual में दिखाई दे रही है. See, this is the image where the two. So what type of image is obtained when object is placed at infinity? The image will be formed at the focus. फोकस मतलब ये फोकस के यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है. द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल बिकॉज इट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. इट इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन बिकॉज ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसा है बट ये इन्वर्टेड है. एंड इट इज डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल. नाउ just see the next part. Here if you place the object beyond C, beyond C का मतलब क्या है? See, this is the center of curvature. When you place the object beyond C, this AB is the object. ये object है actual में. This is the object AB. See, first when you हमने rules देखे. I have drawn two lines. First is when the incident ray passes parallel to principal axis, after reflection it is passing through focus. ये पहला रूल हमने यूज किया. सेकेंड रे आई हैव ड्रॉन that when a ray of light passes through center of curvature, after reflection it goes in the same direction. अभी ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई. ये कहाँ पे मिले? ये पॉइंट पे, A डैश B डैश पॉइंट पे. सी, सो हियर इज एक्चुअली द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड. तो देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटी हो गई. ऑब्जेक्ट ऐसा है, खड़ा है, बट यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया, इन्वर्टेड. एंड द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. सो व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड मतलब क्या? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा ये साइड में, कॉन्केव मिरर के ये साइड में, दैट टाइम व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज ऑब्टेन्ड? द इमेज ऑब्टेन्ड इज डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटी हो गई वो. इट इज रियल बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. एंड इट इज inverted. Inverted मतलब upside down. So such type of images are obtained when you place the object in front of concave mirror at infinity, and in front of concave mirror when you place the object beyond center of curvature. Now let's see what happens when the object is placed at center of curvature. At मतलब हमने अगर ये center of curvature है, so this center of curvature, when you place the object at this center of curvature, कौन से टाइप का इमेज मिलता है? So this is the object AB. We have drawn two rays, one which is parallel to principal axis. After reflection it passes through focus. Another ray going. Always remember you have to draw the rays from the tip of the object. तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये एरो, तो हमें यहाँ से रेज ड्रॉ करने हैं. Always remember. Second ray is when the ray is passing through focus, after reflection it will pass parallel to principal axis. These two reflecting rays, they meet at this point, and this point is the point where the image is obtained. So what type of image? देखो ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम है, so same size image is obtained. It is real because it is obtained on the screen. हमें कॉनकेव मिरर के सामने ही इमेज मिली, so it is real image. But it is inverted. ऑब्जेक्ट देखो ऐसा था बट इमेज उल्टी हो गई, so that is inverted. So when you place the object at center of curvature, the image obtained is real, inverted and same size. Now if you place the object between F and C, F is the focus and between C, so ये object है AB. अगर ये हम देखो हम जैसे जैसे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं वैसे वैसे इमेज देखो दूर दूर चली जा रही है. सो सी, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई भी आदमी अगर ये खड़ा है बिटवीन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर, सो टू लाइन्स वी हैव ड्रॉन. वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू फोकस.
Second, when it is going through focus after reflection passes parallel to principal axis. These two reflected line mean at this point. दिस इज द पॉइंट वेर द इमेज इज ऑप्टेंड. तो देखो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है कंपेयर टू इमेज, सो इमेज इज नाउ मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी हो गई, मैग्नीफाइड. दिस इमेज इज रियल बिकॉज इट इज ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन एंड इट इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब it is upside down. So these are the images found when you place the object at center of curvature and between focus and center of curvature. Now let's see what happens when you place the object at focus. So see, this is the focus. अगर हमने ऑब्जेक्ट को और पास में लेके गए और इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फोकस, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. ray parallel to principal axis after reflection passes through focus. A ray which is passing through center of curvature after reflection goes back in same direction. तो देखो ये reflected ray और ये कहीं पे भी मिल नहीं रहे हैं. So these rays are not meeting. So they will meet. Image is obtained at infinity. Okay. So real image मिलता है because it will be obtained on screen. It is inverted. Inverted होगा image and it will be highly magnified. Highly magnified क्यों? क्योंकि these rays will meet at a very far distance and therefore it will be very magnified image. So जैसे जैसे हम mirror के सामने जा रहे हैं वैसे वैसे image magnified हो रहा है. And now when you place the object in between focus and pole of the mirror, so just see, this is the object AB. So ray parallel to principal axis after reflection goes through focus and ray passing through center of curvature after reflection goes in the same direction. These two rays when you extend they meet at this point. अगर हमने उसको extend किया तो they meet at this point actually. So this is the point where the image is obtained. So image is not obtained on screen, so it is virtual image. It is magnified and it is erect. Erect मतलब ऑब्जेक्ट भी ऐसा था, इमेज भी ऐसी ही मिली. So this is erect image. It is virtual image because it is obtained behind the screen and it is magnified. So it is virtual, real and magnified. So these are the different types of images formed when you place the object at different position in front of concave mirror. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी लगते हैं तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड. व्हेन यू प्लेस एट बियॉन्ड सी it is real inverted diminish. When you place at C it is real inverted same size. When you place between F and C it is real inverted magnified. When you place between at F it is real inverted highly magnified. When between F and P focus and pole it is virtual magnified and erect. So these are different types of image obtained when you place the object at different position in front of concave mirror. So just revise the points.